हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लक्ष्मी मैथ पॉइंट प्रो लक्ष्मी मैथ पॉइंट प्रो चैनल रे आपण मानको स्वागत। आज आम मॉक टेस्ट 6 दबा जे उड़िया इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आउ कंप्यूटर रहिबो। तो सबुथिरु 15-15 टी क्वेश्चन रहिबो। तो पिला माने स्टार्ट कर दबा। रेडी देखो फास्ट क्वेश्चन को जीवा। फास्ट क्वेश्चन कोन कहिछि जगन्नाथ शब्दर सठिक संधि विच्छेद कले कोनटा आसीबो। जे जगन्नाथ शब्दर सठिक संधि विच्छेद कले कोनटा आसीबो। जे जगत युक्त नाथ हबो ना जगत युक्त नाथ हबो ना जगन युक्त नाथ हबो ना जगत युक्त नाथ हबो। कोन आसीबो जगत नाथ जगत युक्त नाथ हां नहीं। तो जगत युक्त नाथ कोठी अछि ना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी जगत युक्त नाथ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। निर्मल शब्दर व्युत्पत्तिगत समास केउटा समास मागिछि निर्मल जे निर्मल निर्मल हला कोन नाही मळ जहार निर्मल तो बहुब्री हबो ना तत्पुरुष समास हबो ना अवयभावी हबो ना कर्मधारय समास हबो। को जे निर्मल शब्दर व्युत्पत्तिगत समास कोनटा हबो नाही मळ जहार निर्मल से तो कोन आसीबो ना हमर सेटा बहुब्री समास हेइबो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आछो ऑप्शन ए। नेक्स्ट को ऐश्वर्य संपा शब्दर समास चिन्हित क्यों समास निहित सेथिरे रहिছে जे उपपद तत्पुरुष समास ना अलोक समास ना नई तत्पुरुष समास ना हमर द्वंद्व समास क्यों समास आसी जीवो को कोन ना हमर ऑप्शन बी हेटा कोन अलोक समास आसी जो अलोक समास बोली ताको हमें कहिथो अलोक समास। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो आखि करोड़ रे पशिबा आखि करोड़ रे पशिबा रूढ़ीर प्रकृत अर्थ कोन जे आखि खराब हेबा ना अत्यधिक क्षण बा शारीरिक दुर्बल हेबा। हाँ एटा हे परिबो आउ कोन अंधार रे देखिबा तो हबनी गभीर निद्रा रे सोइबा एटा भी हे परिबनी कोन आसीबो ना हमर एटा हे परिबनी कि एटा हे परिबनी कोन आसीबो ना अत्यधिक क्षण किंबा शारीरिक दुर्बल हेबा। तो ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट आंसर आसीबो कोन ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट देखो शुद्ध शब्द केउंटा सौजन्यता देछि जे सौजन्य देछि सौजन्यता ना हमर सुजनता पूर्ण कोनटा आसीबो कोनटा आसीबो ना हमर कोन ऑप्शन बी आसीबो सौजन्य कोन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो शुद्ध शब्द कोन ना सौजन्यता हुएनी कोन सौजन्य ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी। गंगाधर मेहर रचित केउं काव्यटी एक शोक काव्य भावे गृहीत गंगाधर मेहर रचित केउं काव्यटी एक शोक काव्य भावे गृहीत जे तपस्विनी ना प्रणय बल्लरी ना इंदुमती ना कीचकबध कोन ना गंगाधर मेहर रचित केउं काव्यटी शोक काव्य भावे गृहीत ना इंदुमती गंगाधर मेहर इंदुमती ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट को अनुराग शब्दर प्रकृत विपरीत बोधक शब्द कोन अनुरागर विपरीत शब्द कोन अनुरागर विपरीत शब्द
ରାଗ, ବିରାଗ, आसक्ति ना द्वेष कौन आसब देख अनुराग शब्दर प्रकृत विपरीत बोधक शब्द हूँ कौन ना अनुराग विराग हेब कौन हेब अनुराग विराग ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कला काठ पड़ी जीवा रूढ़ीर अर्थ कौन कला काठ पड़ी जीवा रूढ़ीर अर्थ कौन कह जे कला रंग हो जावा भय किंबा विषाद रे मुख विवर्ण हो जावा हाँ यहाँ हो पार काठ सुखी जावा काठ तो सुखी किसी ना मृत्युवरण करवा ना कौन ना कला काठ पड़ जावा माने कौन ना भय किंबा विषादपूर्ण विवर्ण हो जावा विषाद रे विवर्ण हो जावा तो ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट आंसर आसियो ऑप्शन बी प्रणिपात शब्दर उपसर्गटा कौन प्रणिपात कही शब्दर उपसर्ग केउटा देख प्र उपसर्ग तो ना कि हम निपात हेनी पात हो पार प्रणिपात प्रणि तो खाली हेनी नी भी आसबनी कौन आसब ना प्रयुक्त नी युक्त पात तो प्रणिपात तो ऑप्शन कौन आसब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आसी ओके नेक्स्ट देख उड़िया साहित्यर सूर्यमुखी कवि भाव किए परिचित उड़िया साहित्य सूर्यमुखी कवि भाव किए परिचित सच्चिदानंद राउतराय ना पद्म चरण पट्टनायक ना कालिंदी चरण पट्टनायक ना आमर वैकुंठनाथ पट्टनायक कौनटा आसब देख उड़िया साहित्यर सूर्यमुखी कवि भाव किए परिचित ना आमर पद्मचरण पट्टनायक होती सूर्यमुखी कवि भाव परिचित किए ना आमर पद्मचरण पट्टनायक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो पिला माने ऑप्शन बी तोडित शब्दर समार्थबोधक शब्द कौनटा नुहे तोडित जे तोडित हूँ गोटे शब्द जार समार्थक शब्द नुहे तोडित किए ना बिजुली विद्युत क्षणप्रभा चपला चंचला सौदामनी ये गुड़िक हूँ कौन ना तोडितर समार्थबोधक शब्द तो कौनटा नुहे कही पिला माने देख जे सौदामिनी हम विद्युत हम क्षणप्रभा हम कौन बिजुली हम ना नहीं तो ऑप्शन डी पिला माने करेक्ट आंसर आसी शशांक नुहे शशांकटा तोडितर प्रतिशब्द बा समार्थबोधक शब्द नुहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख सुजनर सु सूचाउथिबा अर्थटा कौन सुजन रे सु सूचाउथिबा अर्थटी कौन उत्तम ना सुंदर ना सहज ना निजर कौन आसीबो जे सुजन ताने सु माने कौन ना भल निश्चित होइतिबो ना तो सुंदर आसीबनी कि सहज आसीबनी कि निजर आसीबनी कौन ना उत्तम आसीबो भल बा उत्तम आमे कहि परिबा सुजनर सु सूचाउथिबा शब्दर अर्थ कौन ना उत्तम ऑप्शन ए पिला माने करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए नेक्स्ट देखो छोट मुहरे बड़ कथा यही लोकवाणीर अर्थ कौन पिला माने छोट मुहरे बड़ कथा जे छोट पिला कहिबा ना सीमा बाहर कथा कहिबा ना चित्कार करी कहिबा ना मिछ कथा कहिबा कौन आसीबो 13 नंबर क्वेश्चन छोट मुहरे बड़ कथा यार अर्थ कौन ना सीमा बाहर कथा कहिबा ऑप्शन बी एस समस्त कर तो सीमा बाहर कथा कहवा यहीटा हूँ छोट मुहरे बड़ कथा ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख जो धातु बा शब्द शेष प्रत्यय जोग हुए जो धातु बा शब्दर शेष प्रत्यय जोग हुए ताको कौन कहती ताको प्रकृति कहती विभक्ति कहती ना कृदंत कहती ना ताको तद्धित कहती कौन आसीबो कौन आसीबो 14 नंबर क्वेश्चन
जे जेउ धातु बा शब्दर शेष रे प्रत्यय जोग हेले ताको आमे देखो जे धातु सहित प्रत्यय जोग हेले कोन हबो कृदंत आ धातु सहित शब्द जोड़िले कोन हबो ना तद्धित हबो। एटी क्वेश्चन को भलो भाबे सुनाओ जे धातु सहित प्रत्यय जोग करले कृदंत धातु सहित शब्द जोग करले सेटा होची कोन ना तद्धित। एठी कहिची जेउ धातु बा शब्दर शेष रे प्रत्यय जोग हुए ताको आमे प्रथमे कोन कहि परिबा ना ताको प्रकृति बोली कहिबा ताको प्रकृति बोली कहबा। एठी क्वेश्चन टी को भलो भाबे बुझो जे आमे जानिचे धातु सहित प्रत्यय जोग करले कोन हबो ना हमर हला कृदंत आ धातु सहित शब्द जोग करले आमे कोन पाइबा ना आमे तद्धित पाइबा। तो एठी आसीओ कोन ना प्रकृति प्रत्यय आसीओ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीओ। ओके कौमुदी कौमुदी शब्दर अर्थ कोन कमल ज्योत्स्ना बा जाह्नवी कोकिल सूर्य किरण कोन आसीबो कौमुदी कौमुदी अर्थर शब्दर अर्थ होची कोन ना ज्योत्स्ना ही परिबो बा जाह्नवी मध्य होई परिबो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हिस्ट्री रो क्वेश्चन आसीबो देखो Who was the president of Indian National Congress during the famous Lucknow Pact? जो लखनऊ पैक्ट हेतिला 1916 मसिया रे तो से 1916 मसिया रे जो लखनऊ पैक्ट हेतिला सेतेले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए थे अंबिका चरण मजुमदार ना रासबिहारी बोस ना दादा भाई नरोजी ना आनी बेसंत कौन आसीबो ऑप्शन ए कहउछ ऑप्शन ए पिला माने करेक्ट आंसर आसीबो अंबिका चरण मजुमदार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीबो। बहुत बढ़िया सत्यजित देइछ पूजा भी देइछ। नेक्स्ट क्वेश्चन को फेमस सारंजम सिस्टम was related to which of the following medieval administration जे मराठा रेवेन्यू सिस्टम रे थिला ना विजयनगर मिलिटरी ग्रांट रे थिला ना मोगल मनसबदारी सिस्टम रे थिला ना बाहामनी लैंड रेवेन्यू रे थिला को सरंजम सिस्टम टा कोठी ना मराठा रेवेन्यू सिस्टम रे थिला सरंजम सिस्टम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए। ओके पिला माने बुझियला सरंजम सिस्टम टा रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल एडमिनिस्ट्रेशन ना मराठा रेवेन्यू सिस्टम रे थिला सेना। ओके नेक्स्ट को व्हिच ट्रेटी फॉर्मली मार्कड द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार एबे 1767 रु 1769 भितर हेतिला जो और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हेतिला तो सेठी व्हिच ट्रेटीटा होइतिला क्यों ट्रेटीटा होइतिला कहिछि ट्रेटी ऑफ मंगलोर हेतिला ना ट्रेटी ऑफ मद्रास हेतिला ना ट्रेटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हेतिला ना ट्रेटी ऑफ पुरंदर हेतिला कोन हबो 18 नंबर क्वेश्चन ट्रेटी ऑफ कोन ना ट्रेटी ऑफ मद्रास हेतिला मन रखबो ट्रेटी ऑफ मद्रास हेतिला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार समय रे हमर कंक्लूजन रे कोन हेतिला ना ट्रेटी ऑफ मद्रास। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को हो अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज फॉर्मड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936 रे 1936 रे जो हमर पर्सनालिटी जो लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हेतिला 1936 रे जे हो अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज थिले हां महात्मा गांधी ना बी.आर. आंबेडकर ना जवाहरलाल नेहरू ना सुभाष चंद्र बोस कौन आसीबो हो एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज फॉर्मड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 रे कौन ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर थिले से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो कौन बी.आर. आंबेडकर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को in which year did the historic Iram massacre जो
इरम मासाक्रे हितला जेटा को कहा जाय कोन ना जालियाना बाग ऑफ ओडिशा बोली कहा जाय टेक प्लेस सेटा केबे हितला पचारिछ 1940 मसिया रे ना 1942 मसिया रे ना 1930 मसिया रे ना 1945 मसिया रे कोन 1942 मसिया रे हितला ना इरम मासाक्रेटा ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट आंसर आसीयो ऑप्शन बी जे सेटा को हम ओडिसा रो जालियाना बाग बा द्वितीय जालियाना बाग बोली कहा जाय सेटा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीयो नेक्स्ट क्वेश्चन को द वुड्स डिस्पैच in 1854 was primarily concurrent with the which aspect of British rule in India वुड्स डिस्पैच जो आसीथिला 1854 मसिया रे प्राइमरीली कनकरेंट करथिला कोन व्हिच एस्पेक्ट जे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ना एजुकेशनल रिफॉर्म को ना जुडिशियल रेस्ट्रक्चरिंग को ना हमर मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन को वो कौन एजुकेशन सत्यजित एजुकेशन देइचा बहुत बढ़िया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीओ एजुकेशनल रिफॉर्म को गुरुत्व देथिला वुड्स डिस्पैच कमिटीटा मागमागाटा हां हो एमंग द नेक्स्ट क्वेश्चन को हो एमंग द चोलो किंग्स assumed the title of Gongoikonda Cholo after defeating the Palo dynasty of Bengal बेंगल ने पाल डायनेस्टी को डिफीट करके बा परास्त करी गंगईकोंडा चोल क्यों चोल राजा नहीं थिले राजराज वन राजेंद्र वन ना कुलटुंगा वन ना राजाधिराज वन 22 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन बी दउछ राजेंद्र वन सेटा से उपाधि पाइथिले गंगईकोंडा चोल ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन को टिके गोटे मिनिट खाली क्वेश्चन ता देखता हम टिके क्लास मिठा दवा राखी पूर्णमी रे मिठा अच्छा एबे को हां which season of the INC formally adopted the resolution of Swadeshi and boycott movement in 1905 जो 1905 रे हेतिला कोन स्वदेशी मूवमेंट हेतिला सेही केनटा क्यों सीजन रे हेतिला बा क्यों अधिवेशन रे हेतिला बनारस सीजन रे हेतिला ना कोलकाता सीजन रे हेतिला ना सूरत सीजन रे हेतिला ना मद्रास सीजन रे हेतिला 1905 रे जो स्वदेशी मूवमेंट हेतिला जो हमें कौन करथिले ना ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करथिले ना कौन आसीबो बनारस हां बनारस बनारस सीजन रे ही हेतला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीबो बनारस Who was the British Governor General when the Ilbert Bill controversy broke out? Who was the British Governor किए थिले जते बेले इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट हेतिला कोन आसीबो लॉर्ड लिटन आसीबे ना लॉर्ड रिपन आसीबे ना लॉर्ड डफरिन आसीबे ना हमर लॉर्ड मायो आसीबे क्यों की आसीबे जय श्री राम कौन ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन आसीबे बहुत बढ़िया लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर आसीबो लॉर्ड रिपन नेक्स्ट देखो द फेमस नोयानर सेंट were devoted to which deity during the early medieval period in South India? The famous Nayar saint were devoted to which deity during the early medieval period in South India? South India तो किए लॉर्ड विष्णु ना लॉर्ड शिव ना लॉर्ड ब्रह्मा ना गणेश शक्ति एलएस बहुत बढ़िया लॉर्ड शिव लॉर्ड
शिव ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो हु वाज द लीडर ऑफ द खुर्दा रेबेलियन। खुर्दा रेबेलियन जो पाइक रेबेलियन होता 1817 रे सेन मुख्य लीडर किए थिले? कौन आसीबो? बाजी राउत ना बक्सी जगबंधु ना वीर सुरेंद्र साय ना लक्ष्मण नायक? कौन बक्सी जगबंधु? बहुत बढ़िया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो बक्सी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन को द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत केते केबे हितला ना 1761 रे हितला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत केबे हितला 1526 रे ना। तो वाज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड व्हिच मराठा कमांडर? मराठा कमांडर किए थिले ताकि मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली सहित होइतिला थर्ड पानीपत बैटल युद्ध होइतिला केबे ना 1761 रे। सदाशिव राव बाहू ना बाजीराव वन ना बालाजी बाजीराव ना महादाजी सिंधाय? कौन आसीबो? कौन सदाशिव? सदाशिव राव बाहू ओके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडर हुज टेन्योर वाज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिशियली एस्टाब्लिश्ड परमानेंटली 1906 रे जो कहिछि कहांक समय रे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होइथिला केबे ना 1906 बेले? 1906 बेले किए थिले? लॉर्ड कर्जन थिले ना लॉर्ड कैनिंग थिले ना लॉर्ड हेडिंग थिले ना लॉर्ड मिंटो थिले? कौन आसीबो? लॉर्ड कर्जन थिले बंग विभाजन सेई टाइम रहितला तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हो ऑथर द फेमस क्लासिकल वर्क किताब उल हिंद? किताब उल हिंद आल्बेरुनी ना इबन बतुता ना उत्बी ना अमीर खुसरो? कौन किताब उल हिंद है किए? आल्बेरुनी ना होना नहीं? आल्बेरुनी दौच तो आंसर समस्त आल्बेरुनी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को इन व्हिच ईयर उत्कल सम्मिलनी फाउंडेड बाय उत्कल गौरव मधुसूदन दास? जे उत्कल गौरव मधुसूदन दास द्वारा केबे उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठा होइथिला? 1901 रे ना 1903 रे ना 1905 रे ना 1912 रे? कौन 1903 समस्त 1903 आछि तो ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को which article of the Indian Constitution empower the President to consolidate the Supreme Court of India? क्यों आर्टिकल रे अछि? आर्टिकल 123 ना आर्टिकल 143 ना आर्टिकल 131 ना आर्टिकल 136? कौन आर्टिकल 143? बहुत बढ़िया तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी। आर्टिकल 143 रे कह जाईची जे हमरो प्रेसिडेंट टू कंसोलिडेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द concept of producer established by law in the Indian Constitution was borrowed from which country? कौन लॉ आनी ना प्रोड्यूसर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ तो सेटा क्यों आनी? यूएसए पाखु आनी बर करिकी ना जापान पाखु आनी ना यूके पाखु आनी ना ऑस्ट्रेलिया पाखु आनी? कौन जापान? हाँ जापान पाखु आनी सेटा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी सेटा जे जापान पाखु आनी। Which constitutional amendment limited the size of the council of ministers 15% of the total length of the Lok Sabha? क्यों अमेंडमेंट रे जो साइज टाकू 15% माने कोन करा हिची
ना टू द टोटल लेंथ ऑफ 15% निया जाइछि लोकसभा रे 86 बा 18 नंबर अमेंडमेंट रे ना 91 नंबर अमेंडमेंट रे ना 93 नंबर अमेंडमेंट रे ना 44 नंबर अमेंडमेंट रे कोन 91 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो जे 91 नंबर अमेंडमेंट रे सेटा करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडर आर्टिकल 352 national emergency can be declared on grounds of armed rebellion which amendment substituted the internal disturbance with armed rebellion रे कोन 44 नंबर समस्त कर 44 नंबर आछि अमेंडमेंट एक्ट तो 44 नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट को which committee recommended the establishment of three tier पंचायत राज सिस्टम को गोटे मिनिट पिला माने आसुची गाइन गोटे मिनिट रुह फोन टा बारंबार से करी फोन टा को बस आवे बे हबन को हाँ माउसी कॉल करते देखो which committee recommended the establishment of three tier पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया अशोक मेहता कमिटी ना बलवंत राय मेहता कमिटी ना जीवी के राव कमिटी ना एलएम सिंह कमिटी कौन कौन कमिटी अशोक मेहता कमिटी नुहे कौन ऑप्शन क्योंटा अशोक मेहता कमिटी नुहे थ्री टायर पंचायत राज व्यवस्था परा बलवंत राय मेहता कमिटी परा बलवंत राय मेहता कमिटी अशोक नुहे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसियो बलवंत राय मेहता कमिटी ऑप्शन बी। नेक्स्ट को which schedule of the Indian Constitution contains provisions regarding anti defection law क्यों शेड्यूल रे अछि एंटी डिफेक्शन लॉ कोन 10th शेड्यूल रे ना कोन नहीं सेटा 10th शेड्यूल रे रहिछ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी। Who among the following can remove the judge of the high court from office क्यों लॉ द्वारा हमें जज को जे कोर्ट रो रिमूव करि परिबा गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ए एड्रेस्ड बाय पार्लियामेंट ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोन ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताको कोन ना रिमूव करि परिबे आफ्टर द एड्रेस बाय पार्लियामेंट रो सूचना पाइला परे बहुत बढ़िया तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसी जो ऑप्शन सी। In which famous case did the Supreme Court propounded the basic structure of doctrine? In which famous case did the Supreme Court propounded the basic structure of doctrine? कौन गोलकनाथ केस ना केशवानंद भारती केस ना मीराभा मिल्स केस ना मेनका गांधी केस कौन केशवानंद भारती ना हाँ केशवानंद भारती केस के ना 1973 मसीह होता तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टिके व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच ए फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 रे अछि कैन रिमेन द ऑपरेशन विथआउट पार्लियामेंटरी अप्रूवल केते दिन पर्यंत से बलवत्तर रही परिबो 1 month 2 month 6 month 1 year
कौन ऑप्शन बी दौच समस्ते ऑप्शन बी 2 मंथ रखिपारे ऑप्शन बी बहुत बढ़िया अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द यूनियन पार्लियामेंट legislate on any subject in the state list in the national interest क्यों आर्टिकल रे अछि आर्टिकल 248 हबो ना 249 हबो ना 250 हबो ना 252 कौन बी बहुत बढ़िया 249 आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन को who act as the custodian of the contingency fund in India किए कंटीजेंसी फंड रो कस्टोडियन किए थिले ना हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी व्हिच आर्टिकल डील विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी क्यों आर्टिकल अछि पो यूपीएससी होची 315 आर्टिकल 315 होची यूपीएससी द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय होम जे जॉइंट सिटिंग टार किए प्रिसाइड करंती भाइस प्रेसिडेंट तो नुहति कौन स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑप्शन बी समस्त ऑप्शन बी दौच बहुत बढ़िया which fundamental right was converted into a legal right under article 300A by the 44th amendment which amendmental right was converted into a legal right under article 300A by the 44th amendment right to equality right to freedom for religion right to poverty na right to constitutional remedies कौन राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन सी नेक्स्ट को हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड बाय द 42 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे केता पॉलिसी सेठी ऐड करा हितला डीपीएसपी रे दीटा तीनटा चारटा पांचटा केतरा ना चारटा थिला कौन कौन चारटा थिला ना हमर 39 ए 43 ए आउ हला केते ना 48 ए ए चारटा जोड़ा जाइथिला ओके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसी चूज द एबे इंग्लिश असला चूज द करेक्ट एंटोनिमी ऑफ द वर्ड एफेमेरल रो हमर एंटोनिमी टा को कौन आसीबो एफेमेरल हला ट्रांसेंट नुए कौन पेरीपेचुअल हाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म द मेकानिक हेज रिपेयर द ब्रेक्स तो याको हमें पैसिव वॉइस रे करले कौन करि परिबा ना ऑब्जेक्ट आनिबा आगे हाँ मिक्स क्वेश्चन रहउची सबु पर रहउची उड़िया रहिबो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इंग्लिश कंप्यूटर हो तो ऑब्जेक्ट आसी सब्जेक्ट हबो प्रथमे कि आइबो दा ब्रेक ना नहीं तेणु ब्रेक्स माने हला ता बहुवचन आसुची तो एठी हमें हला हैव बीन भी बसी परिबा ओयार तो बसी परिबा नहीं केबे भी बसी परिबा कि ना तो कोनटा आसीबो बी हबोनी हेज थिने हेव हबो परा ना तो कोन आसीबो हेड भी हबोनी
कौन हम ऑप्शन ए हम ना ऑप्शन ए हम द ब्रेक्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीबो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रे बहुत सादा जस्ट खाली टिके हला तार हेल्पिंग वर्ब गुडी को टिके भलो भाबे टिके जानियो दरकार आउ ऑब्जेक्ट आउ सब्जेक्ट चिन्ह थिया दरकार सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द करेक्ट वेज ऑफ प्रीपोजिशन क्यों सेंटेंस रे प्रीपोजिशन टा ठीक रे बसी छि को he observed himself on his studies he observed himself into his studies he observed himself in his study ना he observed himself at his study ओंडा सी सी कहूच तो सी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम रो मीनिंग टा कहबो टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स को जे कहिछि कोन ना टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स टू waste money risklessly to work continuously from early morning to late night ja na to create trouble for everyone to celebrate an event with enthusiasm कोन ऑप्शन बी टू वर्क कंटिन्यूअसली फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट पर्यंत सेटा होची टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ए पर्सन हु हेट्स और डिस्ट्रस्ट मैनकाइंड जे लोक माने हेट करे मैनकाइंड को डिस्ट्रस्ट करे माने विश्वास करे नाही ताको हमें कोन कहबा कोन फिलांथोरिस्ट ना मिस एंथ्रोप कोन मिस एंथ्रोप बोली कह जाय ना तो ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन को स्पेलिंग को एकमेंडेशन रो स्पेलिंग टा को कोंटा करेक्ट द स्पेल्ड वर्ड कौन ऑप्शन ए कहूच एकमेंडेशन हाँ ए सी सी ओ एम एम ओ ए ओ डी ए टी आई ओ एन एकमेंडेशन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसे नेक्स्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच रे करले कोन हबो को ही सेड आल्स आई हैव लॉस्ट माय पर्स तो एठी कोन लागियो जे सी एक्सक्लेम्ड एठी तो सब इन अछि एक्सक्लेम लागिवो तो एटा एदिटा तो काटी गला देखो एटा काटी गला बाकी रहिला कोन आसीबो ना विथ सर हां कोन आसीबो हां विथ सरवास दैट सी हेड जे हेड थिला हेड हला सी हेड लॉस्ट हर पर्स ऑप्शन ए बहुत बढ़िया she exclaimed with sorrow that she had lost her purse option a correct answer आसी next question को fill in the blanks sacredly had he reached the station dash the train depart then हबो ना when हबो ना then हबो ना before हबो एडी कोन हबो when हाँ when the train depart option B correct answer is when choose the synonym obstinate रो synonym टा कोन आसीबो obstinate रो synonym कोन आसीबो flexible आसीबो ना stubborn आसीबो ना pliable आसीबो ना decline आइबो
स्टबर्न स्टबर्न आसो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसो नेक्स्ट को केउठी एरर अछि कहबो एटार जे आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस नाइदर द सुपरवाइजर नॉर द वर्कर्स वाज प्रेजेंट एट द साइट जे ए रे एरर अछि ना बी रे एरर अछि ना सी रे अछि ना डी रे अछि एरर एरर टा कोठी अछि ना सी रे अछि काहे कि नाइदर नॉर थिले ता पाखरे जो सब्जेक्ट अछि ताहारो माने सिंगुलर अछि कि प्लुराल अछि सेटा को लक्ष्य करी कि हमें हेल्पिंग वर्ब बसिताउ जेहेतु एठी वर्कर्स आला बहुवचन अछि तो हमर एठी हला वाज बसिबो नाही तो केट रहिछि ना पार्ट सी रे ही बोल रहिछि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट को फिल इन द ब्लैंक्स ही इज सीनियर डेस माय मी by 2 years he is senior को जे he is senior to me ना हाँ to me she is senior to me by 2 years choose the correct word कोई जी correct word बाछिबो the minister was accused dash bravery for हबो ना of हबो ना with हबो ना about हबो the minister was accused of the of समस्त ऑफ आछे हाँ तो ऑफ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आछे ऑप्शन बी नेक्स्ट को प्लुराल फॉर्म कहबो गोटे नाउन रो कोन ना क्राइटेरियन रो हमर कोन आसीबो ना तारो प्लुराल फॉर्म टा कोन आसीबो क्राइटेरिया क्राइटेरिया आसीबो तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी सिलेक्ट द मीनिंगफुल इडियम कहबो ए ब्लेसिंग इन डिस्गोस को इडियम्स टा को ए सीक्रेट गिफ्ट ना समथिंग बैड दैट टर्न आउट टू बी गुड ए रिलीजियस रिचुअल कोनटा आसीबो हाँ गुड टा अच्छा जे समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट टू बी गुड ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन को fill in the blanks if I dash rich I would help the poor को कोनटा आसीबो if I rich if I dash rich if परे जदी आई अछि कोन बसिबो ना ओयार बसिबो तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को ज्योग्राफी रो व्हिच पास कनेक्ट्स काश्मीर वैली विथ द कारगिल बाय लेह रीजन केउ पासटा हमर काश्मीर वैली सहित कारगिल आ लेह को संयुक्त नाथुला पास ना जोजिला पास ना सिपकिला पास ना जेलपिला नेटवर्क इश्यू रोचे ना तो मोर कौन सी असुविधा नहीं कौन ऑप्शन बी कहछ ऑप्शन बी जोजिला पास व्हाट इज द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग इंडिया एंड चाइना जे इंडिया और चाइना भीतर जो बाउंड्री लाइन टा अछि व्हाट इज द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग इंडिया एंड चाइना कौन रही छी मैकमोहन लाइन हाँ मैकमोहन लाइन रोची इंडिया और चाइना भितरे और रेड क्लिफ लाइन रोची इंडिया और पाकिस्तान भितरे नेक्स्ट को व्हिच रिवर इन ओडिशा फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्य एंड सातपुरा रेंज इन इट्स बॉर्डर जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट
को ऑप्शन बी जे हमर बिंदीय सतपुरा रेंज देखिए जोटा आसुची तो सेटा होची नर्मदा रिवर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी व्हिच बायोस्फीयर रिजर्व इन ओडिशा इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व रे केउटा एड हेची भितरकनिका ना शिमिलीपाल ना देब्रीगढ़ ना सुनाबेड़ा कौन शिमिलीपाल ना यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क रे इनक्लूड हेची किए ना शिमिलीपाल ओके शिमिलीपाल तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी नेक्स्ट देखो व्हिच सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट लैंड एरिया इन द स्टेट ऑफ ओडिशा व्हिच सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट लैंड एरिया इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ओडिशा रे केउ माने बेसी केउ मृत्तिका देखा जाए आलुवियल सॉइल तो हला कोन कोस्टल एरिया रे देखा जाए एटा तो हबनी कोन ना मेनली हला कोन ना रेड सॉइल टा बेसी देखा जाए आ कोस्टल एरिया रे हमरो एलुवियल सॉइल टा देखा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट सह्याद्री जे सह्याद्री रो हमरो कहूची हाईएस्ट पीक टा कोन ददाबेता ना आनामुड़ी कोन आसीबो ए दुटा ऑप्शन रुको तो मान को सुविधा कर दियाला कोन ना हमरो आनामुड़ी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी व्हिच ट्रिब्यूटरी इज नोन एज द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा गंगार राइट बैंक ट्रिब्यूटरी टा या भितर कोनटा जमुना ना सोन ना घाघरा ना गंडक ये सब गुड़ा कहला कोन ना हमर गंगा नदीर किंतु से कहिছে राइट बैंक ट्रिब्यूटरी टा तार कोनटा को कोन जमुनार ना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ओशन करंट इज कोल्ड करंट इन द अटलांटिक ओशन कोल्ड करंट टा कोनटा गल्फ स्ट्रीम ना कैनरी करंट ना ब्राजीलियन करंट ना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट 68 नंबर क्वेश्चन को कोन कैनरी करंट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो कैनरी करंट नेक्स्ट क्वेश्चन को इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द फेमस देवमाली पीक लोकेटेड जे देवमाली पीक टा ओडिसा रो केउ जिल्ला रे अवस्थित कोरापुट रायगड़ा गजपति कंधमाल कोन कोरापुट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसी जिवो कोरापुट नेक्स्ट को व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन ऑलमोस्ट ऑल वाटर वेपर एंड वेदर एक्टिविटीज जे वेदर एक्टिविटीज आ कोन रहिछि ना वाटर वेपर केउ लेयर रे रहिछि स्ट्राटोस्फियर रे रहिछि ना मेसोस्फियर रे रहिछि ना ट्रोपोस्फियर रे रहिछि ना थर्मोस्फियर रे रहिछि कोन ट्रोपोस्फियर रे ना तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसीबो ट्रोपोस्फियर रे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर विथ बांग्लादेश जे बांग्लादेश सहित किए अधिक बॉर्डर शेयर करछि क्यों राज्य आसाम मेघालय वेस्ट बेंगल ना त्रिपुरा कोन आसीबो वेस्ट बेंगल ही हमर बांग्लादेश सहित अधिक लैंड बाउंड्री सृष्टि करिछि नेक्स्ट देखो व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन द सुंदरवन डेल्टा जे सुंदरवन डेल्टा रे केउ प्रकार रो फॉरेस्ट देखबा पई हमको मिलिबो
ट्रॉपिकल एवरग्रीन ना मैंग्रोव फॉरेस्ट बा टाइडल फॉरेस्ट कहि परिबा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तो हबनी अल्पाइन फॉरेस्ट आसीबो कोड कोन मैंग्रोव फॉरेस्ट बा हमें टाइडल फॉरेस्ट बोली कहू जुआरी अरण्य। नेक्स्ट देखो व्हिच रिवर फॉर्म द फेमस गक्कक फॉल इन कर्नाटक जे कर्नाटक रो केउ रिवर उपरे गक्कक फॉल रही सारावती घटप्रभा ना कावेरी ना तुंगभद्रा कौन घटप्रभा घटप्रभा कावेरी नुहे घटप्रभा ऊपर रही ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन इंडिया इन टर्म ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया एरिया अनुसार आमर ओडिशा रो रैंक केते इंडिया रो 7 नंबर अच्छी ना 8 नंबर अच्छी ना 9 नंबर अच्छी ना 10 नंबर अच्छी कौन 8 नंबर रे अच्छी इंडिया। Which state separate Europe from Africa at the entrance of Mediterranean Sea जे कहिछि केउ स्टेट टा सेपरेट करछि यूरोप फ्रॉम अफ्रीका रो एंट्रेंस करछि कोन ना मेडिटेरियन सी मध्य को एंट्रेंस करछि स्ट्रेट ऑफ मालाक्का ना स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ना बेरिंग स्ट्रेट कोनटा सिओ बेरिंग केनाला कोन ऑप्शन बी आसीबो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को which curve represent the theoretical relationship between unemployment and inflation rate which curve represents the theoretical relationship between unemployment and inflation rate कौन आसीबो फिलिप्स कर्व बी नुहे कौन आसीबो फिलिप्स कर्व एटा हमें फिलिप्स कर्व बोली कहि थब ऑप्शन सी। व्हाट इज द प्राइमरी मेट्रिक यूज्ड बाय द आरबीआई फॉर टारगेटेड इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क व्हाट इज द प्राइमरी मेट्रिक यूज्ड by the RBI for targeted information and a monitoring under its monetary policy framework ପାଇଁ wholesale price index आସୁଛି ना consumer price index ना producer price index ना GDP deflator कौन बी ऑप्शन बी आसीबो consumer price index CPI ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो। In economic terms, what does Graham's law state? Sorry, Graham's law state. Answer दियो कौन आसीबो जे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ना बेड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी कौन आसीबो ऑप्शन बी आसीबो बी बेड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी। व्हिच कमिटी रेकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ FERA एक्ट विथ द FEMA एक्ट इन इंडिया कोई क्यों कमिटी रेकमेंड करथिला ताको कौन तारापुर कमिटी ना नरसिंहा कमिटी ना विजय केलर कमिटी ना रंजन कमिटी ऑप्शन कौन ऑप्शन
ए आसी ऑप्शन ए तारापोर कमिटी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसी which index measures inequality in wealth or income distribution in a society କହିଛି which index କେଉଁ index ଟା measure କରୁଛି inequality in wealth ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖର inequality ସମାନ ପ୍ରକାରର ହେଲା କଣ ନା wealth ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ତ କେଉଁଟା measure କରୁଛି human development index ନା Gini coefficient ना मिसरी इंडेक्स ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन ना गिनी कोफिशिएंट ऑप्शन बी मन रखिबा टिके व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड्स पाई जे व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट सेटा को हमें क्यों इंटरेस्ट रेट कहूचे आरबीआई लेंड्स करूची मनी टू कमर्शियल बैंक को ताको रेपो रेट कहबा ना रिवर्स रेपो रेट कहबा ना बैंक रेट कहबा ना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाली कहबा ताको हमें बैंक रेट बोली कहा जाए कोन ताको बैंक रेट बोली कहा जाए ऑप्शन सी रेपो रेट न बैंक रेट YOLO revolution in India was launched to boost the production of which commodity? YOLO revolution कौन पाई होइतिला YOLO revolution हमर ऑयल सीड पाई हला YOLO revolution मिल्क पाई व्हाइट हमर कोन मिल्क पाई व्हाइट revolution आ फूड ग्रेन्स पाई ग्रीन revolution Who among the following estimate the national income in India जे नेशनल इनकम टा इंडिया रो की एस्टिमेट करथाए नीति आयोग ना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो among the following estimates the national income in India के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नीति आयोग नुहे से प्लान करिवो नीति आयोग तार हला काम योजना खाली करिवो नीति आयोग तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसे ऑप्शन बी व्हाट इज स्टैगफ्लेक्शन दा कोन हाई ग्रोथ विथ हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट विथ लो इन्फ्लेशन कोनटा आसीबो को तो क्वेश्चन टा काटी जेटा एटा आसीबो कंबाइंड विथ हाई अनएम्प्लॉय एंड स्टैग्नेंट कोन उडे देछि तो एटा कैंसिल कर दियो क्वेश्चन देखो व्हिच 5-year plan in India adopted the famous महानलबिस मॉडल क्यों 5-year plan रे होइतिला फास्ट 5-year प्लान हला कोन ना एग्रीकल्चर ऊपर गुरुत्व देथिला तो सेकंड टा आसीबो तो सेकंड टा होची शिल्प ऊपर गुरुत्व देथिला ना नेक्स्ट को which tax is in India contribute highest percentage of indirect tax revenue in the union budget रे क्यों टैक्स टा कंज्यूम कस्टम्स ड्यूटी ना गुड एंड टैक्स सर्विस ना कॉर्पोरेशन टैक्स ना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कौन बी आसुची जीएसटी बस जीएसटी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसे ऑप्शन बी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड रो फुल फॉर्म कोनटा नाबार्ड रो फुल फॉर्म कोनटा रे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कोन ना नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एग्रीकल्चरल रिकंस्ट्रक्शन ना नेशनल एसोसिएशन ऑफ बैंकर्स एंड रूरल डेवलपर्स कोन आसीबो ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए आसीबो करेक्ट आंसर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीबो
नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर टू इंडियाज ग्रोस वैल्यू एडेड which sector contributes the highest share to India's gross value added एग्रीकल्चर सेक्टर रे हिची ना इंडस्ट्रियल सेक्टर रे हिची ना हमर सर्विस सेक्टर रे ना माइनिंग सेक्टर रे हाईएस्ट शेयर कोंडी सर्विस ना तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसियो सर्विस सेक्टर रे नेक्स्ट क्वेश्चन को हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया रो ऑथर किए रमेश चंद्र दत्त ना दादा भाई नारोजी ना एमजी रानाडे ना बी.आर. आंबेडकर के दादा भाई नारोजी ना दादा भाई नारोजी कौन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बा बजेट प्रेजेंट करिवो जे इंडिया रे जो बजेट जो प्रेजेंट करा हुए एनुअली सेटा क्यों आर्टिकल रे रही आर्टिकल 110 रे अछि तो ना आर्टिकल 110 होची कोन मनी बिल ना 112 ना 265 ना 280 कोन 112 ना समस्त 112 आसुची तो 112 करेक्ट आंसर आसो 112 ओके नेक्स्ट को कंप्यूटर आसिला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस राम रो फुल फॉर्म कोन कोन साइक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी ना स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कोन ऑप्शन बी जेटा आसियो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस राम नेक्स्ट देखो व्हिच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट गोटा कनेक्ट कराबो गोटा पोर्ट डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर कैरी हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल पाइबा पई हमें क्यों जेटा को यूज करते बा पोर्ट को यूज करते VGA पोर्ट ना HDMI पोर्ट ना सीरियल पोर्ट ना पैरेलल पोर्ट कोन जे हमें डिजिटल हला साउंड पाइबा हाई डेफिनेशन ऑडियो पाइबा और वीडियो सिग्नल पाइबा पई हमें कोन HDMI व्यवहार करथाउ HDMI पोर्ट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इन MS वर्ड व्हाट फंक्शन की कॉम्बिनेशन टू यूज्ड ए ट्रिगर ए ट्रेजर्स लुक एट सिनोनिम्स जे सिनोनिम्स टाको हमें ट्रेजर करिया पई तो क्यों शॉर्टकट कीटा यूज हमें करिथाउ कोन शिफ्ट प्लस F ना F7 शिफ्ट प्लस F7 ही व्यवहार करथाउ कोन शिफ्ट प्लस F7 नेक्स्ट क्वेश्चन को which topology use a signal continuous central backbone cable to connect all network जे कहिछि कोन which topology जे सेटा होछि स्टार टोपोलॉजी ना बॉस टोपोलॉजी ना रिंग टोपोलॉजी ना मेश टोपोलॉजी क्यों टोपोलॉजीटा बैकबोन केबल टू कनेक्ट ऑल नेटवर्क को सेटा आसीबो बॉस टोपोलॉजी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार नुए बो हमरा बॉस व्हाट डज मैक स्टैंड फॉर इन मैक एड्रेस इन नेटवर्किंग मैक रो फुल फॉर्म कोन कहिछि मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेमोरी एलोकेशन कोड ना मास्टर एक्सेस चैनल ना मशीन एक्सेस कंट्रोल कोन सॉरी कोन मीडिया एक्सेस कंट्रोल एटा आसीओ मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीओ ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच शॉर्टकट की इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन MS वर्ड और MS पावर पॉइंट रे हमें क्यों शॉर्टकट कीटा यूज करथाउ इंसर्ट ए हाइपरलिंक गोटे ऐड करिया पई
कंट्रोल प्लस एच ना कंट्रोल प्लस के ना कंट्रोल प्लस एल ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के हाइपरलिंक कौन ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस के बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट टाइप ऑफ malware locks a user's file or device and demands payment to restore access। तो ସେଇଟା ଗୋଟେ malware तो केउ प्रकार सेटा malware थिला जे spyware ना ransomware ना ट्रोजन हॉर्स कोनटा आसीबो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी। नेक्स्ट को इन एमएस एक्सेल व्हाट सिंबल मस्ट प्रिसाइड एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला बा फंक्शन पाई आमे केउ सिंबलटा प्रथमे यूज करू @ ना इक्वल ना प्लस ना हच कौन ना इक्वल चिन्ह देकी ना इक्वल तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीजो ऑप्शन बी। व्हिच की फोर्सेस ए हार्ड पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे जे गुटे हार्ड पेज को ब्रेक करिबा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे शिफ्ट प्लस एंटर मारिबा ना कंट्रोल प्लस एंटर मारिबा ना ऑल्ट प्लस एंटर मारिबा ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर मारिबा कौन कंट्रोल प्लस एंटर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी रो फुल फॉर्म कौन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना सिस्टम मास्टर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ना सिक्योर मैसेज टेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन आसीबो ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए दे जिबा में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हला एसएमटीपी। व्हिच यूटिलिटी इन विंडोज क्लीन्स अप unused files to free up disk space। आ मात्र 4टी क्वेश्चन देना सरीबो कौन ना सेटा डिस्क क्लीन अप ऑप्शन ए नुहे सेटा हबो डिस्क क्लीन अप ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए डेसिमल नंबर 25 जे 25 रो डेसिमल केता आसीबो ना ए आसीबो ना हां 11001। नेक्स्ट को which shortcut key open the find and replace dialog box with the replace tab active in MS Word रे कंट्रोल F ना कंट्रोल H ना कंट्रोल R ना कंट्रोल G which shortcut key is open the find and replace dialog box with the replace tab active in MS Word रे कौन सेटा हला कंट्रोल H आसीबो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो कंट्रोल H। व्हाट डज SSD यूज्ड टू स्टोर डाटा अनलाइक ट्रेडिशनल मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक प्लेटर्स ना फ्लैश मेमोरी ना ऑप्टिकल डिस्क ना मैग्नेटिक टेप्स कोनटा What does SSD used to store data unlike or traditional magnetic hard disk drive टा कौन ना फ्लैश मेमोरी ना हाँ फ्लैश मेमोरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को इन MS PowerPoint which shortcut key duplicates the select slide instantly जे डुप्लिकेट करि परिवा कंट्रोल एन मारिकी ना कंट्रोल डी मारिकी ना कंट्रोल एम मारिकी ना ऑल्ट डी मारिकी देखिबा 105 की आंसर दे परछि कोन जे कहूची कोन ना इन एमएस पावर पॉइंट रे शॉर्टकट कीटा तमे डुप्लिकेट करिया पई सिलेक्ट करिकी स्लाइड आउट इंस्टेंटली बाहर करियो तो सेटा हबो कंट्रोल डी सॉरी ऑल्ट डी कंट्रोल डी नु ऑल्ट डी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी। तो वीडियो टी केमिति लागिला
तो कमेंट माध्यम निश्चित जनइब और सांग मानक शेयर कर सब्सक्राइब करने को भूलनी लाइक कर। जय जगन्नाथ। नेक्स्ट देखा आसंता काली। जय जगन्नाथ।